In our previous lecture of potentiometry, we already studied about what is a potentiometry, what are potentiometric techniques, how it works, what is the principle behind it, what is the component of a potentiometric cell. There were 5 components of it, okay, and what are the advantages and application of a potentiometric technique. So, what was a potentiometry? Potentiometry is a technique in which an electrode potential changes are monitored, are recorded at different subsequent intervals in a prolonged, in a going on titration, in a titration process, and they are being noted down either in form of a calculation or in a graph, and the end point is noted down in a sudden, is noted down in the way of a sudden fluctuation in electrode potential. A sudden rise in electrode potential changes takes place over the changes in analytical concentration or changes in the ions or concentration of ions in analytic solution or test solution, which is to be determined. जो एनालिटिकल सॉल्यूशन के आयंस चेंज होते हैं, उनके चेंजेस के द्वारा हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है, विच इज बीइंग रिकॉर्डेड अप बाय अ वोल्टामीटर और गैल्वेनोमीटर. देन दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्री. Then we came to know about the potentiometric cell. Potentiometric cell, as I already told you, as I already taught you in my last lecture, of in which it comprised of components of potentiometric cell. There were 5 components of potentiometric cell. First was reference electrode, indicator electrode, salt bridge, analytical solution, and a galvanometer. We all very deeply studied about functions of all the potentiometric component. A potentiometric component, reference electrode, refers to electrode which remains stable, which is quite insensitive to the changes in ionic concentration और analytical concentration changes के लिए वो stable रहता है, वो जो during the whole process और पूरे titration में change नहीं होता, that is reference electrode. Its value remains stable and also well known or predetermined. उसकी value predetermined या well known होती है. It only works as a reference for the indicator electrode, which determines the concentration of ion under study or analytical ions. Then next one is indicator electrode. Indicator electrode को हम working electrode भी कहते हैं. Working electrode क्यों? क्योंकि वही indicator electrode एक electrode है जो हमें analytical concentration पता करता है या analytical concentration बताता है. It changes its electrode potential all over the titration, all over the process. During the entire titration, जो वोल्टामीटर जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस आपके गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपको पता चलते हैं, इट चेंजेस थ्रू आउट द टाइट्रेशन. शुरू में स्टेबली चेंज होता है, इट चेंजेस स्लाइटली, फिर आपको जो ग्राफ मिलता है, हमने पोटेंशियोमेट्रिक कर्व या पोटेंशियोमेट्रिक ग्राफ भी प्रीवियस क्लासेस ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक में डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कि स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ शोज अ स्टीप हॉरिजॉन्टल राइज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट थोड़ी देर में ही जैसे ही आयनिक कंसंट्रेशन चेंज होने लगती है, योर पोटेंशियल changes suddenly or steeply. There is a sudden or steep rise in the potential, electrode potential, with a minute single addition or single drop addition from the burette. titrant का जैसे आप single drop भी डालते हैं, आपका जो electrode potential होता है वो steeply rise करता है. There you get a steep or vertical line in the graph, और उसी vertical line के जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे आपको आपका एंड पॉइंट मिलेगा. ओके, देन आफ्टर दैट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एंड पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज अचीव्ड, आफ्टर दैट द ग्राफ अगेन शोज अ स्टीप हॉरिजॉन्टल लाइन. दैट मीन्स द कंसंट्रेशन remains stable again throughout the titration, and that's why the electrode potential changes very slowly with the change in concentration of analyte or with the addition of titrant from the burette. Then third component was salt bridge. Salt bridge we will study in today's lecture. अभी आज हम इस लेक्चर में अब हम देखेंगे सॉल्ट ब्रिज के क्या यूज़ है, सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. वैसे फॉर अ समरी, फॉर इंट्रोडक्शन, आई हैव ऑलरेडी taught you in my previous lecture of potentiometry. Salt bridge serves as a connecting
connector between the two indicator electrode and reference electrode. It maintains the electrical neutrality or electrolytic balance between the two solution, one in which reference electrode is dipped out or in indicator electrode is dipped out. Then fourth component is our analytical solution. That is the most important component, analytical solution. It is the solution or test solution or solution of the analytical ion. And what is analyte? The analyte is the test solution or test concentration of analyte or concentration of that ion which are to be determined, जिनका हमें एनालिसिस करनी है, which are under study or which are under analysis. उनका कोई भी electrolytic solution, why it is needed as electrolytic solution also, because that is also important, because if the solution will not be electrolytic, they will not diffuse into ions properly. If the solution will not be electrolytic, proper dissociation into its ion will not happen. If dissociation into its ions will not happen, then proper ions of those metal ions or those analyte will not be formed. और अगर ions properly form नहीं होंगे तो उनका जो concentration होगा वो properly determine नहीं हो पाएगा. इसीलिए you all have to note it down. The solution should be, analytical solution should be a proper electrolytic solution of the analyte which is to be determined or which is under study. हमें उसका एक अच्छा analytical solution, electrolytic solution ही analytical solution की तरह use करना है. Then our last component was galvanometer, which is also important part of a potentiometric cell. Galvanometer determines the electrode potential of the cell. अगर गैल्वेनोमीटर नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं चल पाएगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से फिर आप इलेक्ट्रोड जो आपकी आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है या एनालिटिकल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, दैट कैन बी इजीली डिटरमाइंड. ओके, तो दिस वाज द समरी, दिस वाज द जिस्ट ऑफ लास्ट two classes, last two lectures on potentiometry. In today's lecture, in today's this present class, we will study about the indicator electrodes and salt bridge. What is indicator electrode, what are the types of indicator electrodes, and what is a salt bridge. Then indicator electrode is one of the two electrodes. हमने आपको बताया कि there are two electrodes, one is reference electrode and indicator, another one is indicator electrode. The indicator electrode is one of the two electrodes which is considered as a working electrode, which determines the electrode potential of the test solution or electrolytic solution with the change in concentration of ions in analytical solution or change in concentration of analyte. ओके, जैसे जैसे आयंस के कंसंट्रेशन एनालाइट के चेंज होते जाएंगे, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज करता जाएगा, जिसको आप गैल्वेनोमीटर से मेज़र करेंगे और वो आपको फिर बता देगा कि आपके जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है उसमें कितना कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इज प्रेजेंट देयर. द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट विल बी इजीली डिटरमाइंड. देन it is one of the two electrodes which shows a responsive change, which shows a subsequent change, a responsive change, a sensitive change to the changes in the solution, to the changes in the test solution in which it is being dipped out. जिसमें वो dipped out किया गया उसमें जो भी changes होंगे वो बहुत sensitive होता है. Indicator electrode is very sensitive to the any kind of ionic changes in the test solution or analytical solution. वो आपको तुरंत नोट डाउन कर देगा कि किस तरह का चेंज इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन में या आयनिक कंसंट्रेशन में कैसा चेंज हुआ है, वो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के चेंजेस से तुरंत इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इंडिकेट कर देगा. इसी वजह से इसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ चेंजेस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसी वजह से हम इसे वर्किंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. There are many types of, तो this was all about indicator electrode. This is not stable. This is, इसके जो characteristics हैं वो बिल्कुल reference electrodes के opposite है. This is not stable throughout the process. It constantly changes with time during that all over during the titration. Okay. Then it is very sensitive. That was insensitive, but it is very sensitive to the changes in ionic concentration. Then let us study the types of indicator electrode we can use to determine the endpoint of a potentiometric titration. The electrode contains the membrane that is sensitive to the activity or that is sensitive to the concentration of the analyte which is under study or the analyte whose concentration is to be determined. Therefore, the concentration of the potential of indicator electrode
depends upon the concentration of analyte or concentration of analytical solution which is under study. तो डायरेक्टली जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, और इसी प्रिंसिपल को हमें यूज करके पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक के टाइट्रेशंस हम करते हैं. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल that depends upon the analytical concentration or concentration of ions under study. It is denoted by IE, indicator electrode. It is denoted by IE, capital I and capital E. It is very selective or sensitive to the analytical concentration or concentration of analyte under study or the test solution. जितने भी ions, concentration of ions in the test solution के लिए ये बहुत selective और sensitive भी है. Same kind of electrode you can use in every type of titration. बट सबके वैल्यूज़ अलग अलग आएंगे, दैट इज सेलेक्टिविटी. सेंसिटिव तो है ही, सेलेक्टिव भी है. सेलेक्टिव से हम क्या समझते हैं? सेलेक्टिव का मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टाइट्रेशन के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करना, दैट इज सेलेक्टिविटी. अगर ये सेलेक्टिव नहीं होगा तभी हर तरीके के टाइट्रेशन से सेम रिजल्ट देगा, दैट शुड नॉट हैपन. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी सेलेक्टिव. द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कि इट शुड बी वेरी सेलेक्टिव, देन इट शोज अ वेरी रैपिड एंड रिप्रोड्यूसिबल रिस्पॉन्स. ये बहुत ही रैपिड और रिप्रोड्यूसिबल रिस्पॉन्स शो करेगा. रिप्रोड्यूसिबल रिस्पॉन्स मीन्स इफ सम एरर occurs or you want to take your repeat your titration and take your reading again, then you can reproduce the whole process very easily. That means it is rapid and reproducible also. The method is very rapid and reproducible. बहुत आसानी से आप अपनी रीडिंग्स को रिप्रोड्यूस करके you can get a precise as well as accurate result. Then ideal properties include it should be minimum soluble. Minimum solubility, why is it? Because अगर उसकी solubility minimal नहीं होगी तो वो आपका जो solution है उसमें dissolve हो सकता है, तो it should be minimum soluble. It is a very necessary and important property of indicator electrode that its solubility in analytical solution should be 0. It should be minimum or 0. बिल्कुल solubility नहीं होनी चाहिए. Then electrical conductivity, it should have a great electrical conductivity. Electrical conductivity अच्छी होगी तभी हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं उसके पोटेंशियल को एग्जिबिट कर पाएगा. जो कंसंट्रेशन हमारे आयंस के चेंज हो रहे हैं उनसे हमारे चार्जेस चेंज हो रहे हैं. चार्जेस मीन्स पोटेंशियल. जो पोटेंशियल चेंज हो रहे हैं अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होगी तभी उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा, राइट? ओके, तो दैट्स वाई दिस इलेक्ट्रोड शुड हैव a good or great electrical conductivity. Generally the conduction takes place in form of migration of charge ion within the system. Okay, so it should have a great electrical conductivity. It should be selective. ये हमने आपको बताया कि जो भी एनालाइट अंडर स्टडी है उसके लिए काफ़ी सेलेक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिविटी इसकी सेलेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो ये सारे टाइट्रेशन में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देगा. दैट शुड नॉट हैपन, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ एरर. It must be capable of selective binding or selective reactivity toward different kind of or different analytical ions or different analytes. There are three types of binding, there are three types of selective reaction which it shows, and exchange, crystallization and complexation. Then comes types of indicator electrodes. The types of indicator electrodes are basically that include two types, glass indicator electrode and metal indicator electrode. There are two types of indicator electrode, the metal indicator electrode as well as glass indicator electrode. So firstly we will study about the glass indicator electrode. Glass indicator electrode comprises of a glass membrane made up of silicon dioxide. Here you can see the diagram. This is the silicon dioxide. Here you can see the silicon dioxide, SiO2. This membrane, this layer comprises of silicon dioxide. Okay, this is the concentration results in potential difference. तो जो भी changes in concentration है that results in the potential difference across the membrane which is being measured by in form of voltage by a galvanometer.
Okay, so this was glass membrane electrode or glass electrode, glass indicator electrode. Then comes properties of glass indicator electrode. First property, the important property, the potential should not be affected by presence of oxidizing or reducing agent. Okay, so potential difference should not be affected by oxidizing or reducing agent. Some other oxidizing reducing agent if present should not get affected the entire process or the titration. Then next property of glass indicator electrode includes operates over a wide pH range. Suppose you are using glass electrode in a wide pH range. Okay, बहुत सारे type of pH range where it is applicable for all kinds of neutralization titration और acid base titration. तो जहाँ पर आप acid base titration या neutralization titration के लिए use कर रहे हैं तो that should be glass electrode should be applicable, should be used, should be able to be used in all kind of acid and bases. Wide pH range तभी आएगा जब हम different sort of acid and bases को use करेंगे. That means from weak acid base to high acid base. Weakly acidic basic medium से लेके highly acidic basic medium तक use होना चाहिए आपका glass electrode. यानी हम weak acids में भी use कर सकते हैं और strong acid में भी use कर सकते हैं. हम weak bases के लिए भी use कर सकते हैं और strong bases के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारे ग्लास इलेक्ट्रोड में एक हमारी important characteristic होनी चाहिए. And we all have seen also and we all of you have must worked out it also on a pH meter. pH meter में हम देख सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड ही होता है and it works very easily, very accurately in any of the pH system. कोई भी pH changes किसी भी pH system में जब आप उसे डिप करते हैं आपको काफ़ी गुड रिस्पॉन्स और काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं. तो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड जो है उसकी एप्लीकेशन होती है. इट ऑपरेट्स इन ऑल काइंड ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन. इट कुड बी सिंथेटिक, इट कुड बी नेचुरल ऑल्सो. नेचुरल acid based solution means physiological solution या biological solution which are found out in our body. Okay, तो इसी वजह से pH मीटर में आपका ग्लास इलेक्ट्रोड होता है और pH मीटर को हम सभी ने कई जगह पे कई सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का और कई सारे सिंथेटिक जो आपके एसिड एंड बेसेस हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसेस हैं, आपकी इनऑर्गेनिक एसिड एंड बेसेस हैं, सबके पीएच डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया है एंड दे कैन बी इजीली यूज ओवर physiological solutions also. We all have done in our practicals of biochemistry. Okay, right? Then it should show, the glass electrode should show fast response. अच्छा रिस्पॉन्स शो करना चाहिए, ठीक है, फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए. इट शुड बी सेंसिटिव ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स हो वो काफ़ी एक्यूरेट हो. देन इट शुड जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आई टोल्ड यू अर्लियर अ फ्यू मिनट्स बैक, इट फंक्शंस वेरी वेल इन फिजियोलॉजिकल सिस्टम. फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी कि बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस में बहुत अच्छे से वर्क करेगा हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड. जो हमारा ग्लास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, इट मेजर्स ऑल सॉर्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन पीएच इन अ सिस्टम. तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से इट वर्क्स वेरी वेल फॉर अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम. इट शुड बी वेरी सेलेक्टिव, बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है. सपोज हमारा जो फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन है या एसिड बेस्ड सोल्यूशन, सपोज आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर आप पीएच डिटरमाइन कर रहे हैं और आप NaOH का पीएच डिटरमाइन कर रहे हैं या H2SO4 का डिटरमाइन कर रहे हैं, तो दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सेंसिटिव आने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एसिड्स हैं तो दोनों के पीएच ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. तो दैट इज ऑल विच मीन्स सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी. सेलेक्टिव और सेंसिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए. लॉन्गर लाइफ स्पैन, इनके ग्लास इलेक्ट्रोड्स के जो लाइफ स्पैन होते हैं दैट आर लॉन्गर एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रोड्स व्हेन यूज्ड एज पर द instruction of care. Then next comes our metal membrane electrode. Metal membrane electrode is the simplest type or simplest form of direct indicator electrode in which a metal comes in a solution of its own ion. A metal is dipped in the solution of its own ion. ओके, उसका कोई किसी मेटल का खुद का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड आउट होता है एंड दैट वर्क्स एज ए मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड.
एट द मेटल सोल्यूशन इंटरफेस, अब जो मेटल और सोल्यूशन का इंटरफेस बनता है होता है वहाँ पे एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन के वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द concentration of activity means concentration of metal ion which is under study. Several metal such as silver, copper, lead, cadmium, mercury will participate in a reversible electron exchange and can serve as an indicator electrode for their ions. The potential can be measured directly with respect to the reference electrode using simple arrangement as shown in the diagram. So, in the diagram you can see very well. Okay, you can see easily this is the metal electrode plate which is being dipped up. This is the solution of metal in which it is being dipped up. This is the voltmeter which determines the electrode potential. Okay, electrode potential which is to be determined. Okay, then this is the reference electrode which remains stable. This is the diagram of a membrane, metal membrane electrode. This is a simple arrangement we all have seen there. Okay, right. Moving ahead comes to our next important component, salt bridge. Moving ahead comes to our next important component which is salt bridge. As I told you earlier, salt bridge serve as a connector between the two electrolytic solution. So, what does it mean? A salt bridge is an interface. A salt bridge in electrochemistry is a device which is used to connect the oxidation and reduction half cell or two different electrolytic solution in a potentiometric cell or voltaic cell. दो डिफरेंट सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के काम में आता है ये सॉल्ट ब्रिज. ओके, इट इज ऑफ शेप इन्वर्टेड यू. ओके, इट इज ऑफ शेप इन्वर्टेड यू. ओके, दिस इज द शेप ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज and it is used to connect the oxidation and reduction reaction or two different electrolytic solutions into one form inside the one potentiometric cell or voltaic cell or any sort of any kind of electrochemical cell. Then it maintains the electrolytic balance or electrical neutrality within the cell. ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, दोनों के बीच में, दोनों सेल के बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बना के रखता है विद द ट्रांसफर ऑफ आयंस थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज. It maintains the electrical neutrality or the electrolytic balance within the cell, preventing the cell from rapidly turning the reaction to the equilibrium. ठीक है, किसी कोई फ्लक्चुएशन ना हो करंट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई फ्लक्चुएशन ना हो, आयंस के चेंजेस होने से बहुत डिफरेंस करंट में नहीं हो, इस वजह से एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक आपका न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है बिटवीन द both the solutions. Okay, both the half cell reaction. It is of U shaped filled with inert electrolyte. एक U shaped होता है ये, ठीक है, U shape का होता है जिसमें एक electrolytic solution fill होता है, उसको आप inverted form में use कर सकते हैं. Then glass tube bridge, filter tube bridge. Functions of a salt bridge. What are the functions of a salt bridge? It allows electrical contact between the two solution. जैसा कि मैंने आपको बताया, it allows the electrical contact between the two solutions. Suppose these are the two solutions, it allows the electrical contact. This is the function of salt bridge or this bridge. It allows the electrical connectivity or electrical contact, or it maintains the electrical neutrality between the two solutions. Okay, it connects the two solutions, it maintains the electrical neutrality or electrical balance between the two solutions under study.
Moving ahead on to our next slide. This is the diagram for a salt bridge. Here we can see easily. We can easily see these were the two electrolytic solution, CuSO4 and ZnS4. Then this is the copper electrode and this is the zinc one, and this is the salt bridge which maintains electrical neutrality through this solution, and this is the salt bridge which we are studying. This is the voltmeter which determines the voltage, or we can say electrode potential of analyte. Electrode potential of indicator electrode, okay. Indicator electrode which determines concentration of analyte. So, this is all about salt bridge. This was the salt bridge. This is the reference. If you people want to go through it, you can serve out this reference, you can go through this, you can refer this reference. Then we can summarize our full potentiometric topic. What was potentiometry? Potentiometry is basically based on the principle of the change in electrode potential due to change in concentration of ions. This is the basic core principle behind the potentiometry. Then how does it happen or how does it proceed? As you proceed your titration of potentiometry, as a single drop of or a single ml of titrant is being added from the burette to the analytical solution or to the solution of analyte which is being determined, which is to be determined. It is also called as our test solution. It is to be determined. जैसे ही आप ml of titrant के डालेंगे burette से, the concentration of analyte changes in form of change in charges or change in ions. That change in ions is being noted down by the change in electrode potential of our indicator electrode, right? Indicator electrode. The change in electrode potential of indicator electrode is being determined by our galvanometer in form of electrode potential. This all through going process indicates different in electrode potential all through the process, which can be noted down and which can be plotted in form of a graph. We all studied ml of titrant added from burette. This is y axis, this is x axis. You will get a sigmoid shaped graph and your end point comes here in between. Okay. This remains stable and this remains stable. This is the electrode potential on y axis and this is the ml of volume of titrant which is being added up from the burette. So, this was how potentiometric was done. Then the components were 5 components we all have studied: reference electrode, indicator electrode, galvanometer, salt bridge, and the most important analytical solution or the solution of test solution which is in the study. Reference solution, reference electrode, indicator electrode, reference electrode was stable, indicator electrode was the electrode which shows the change in electrode potential according to the change in concentration of analyte or ions which are under study, or which is the test solution, which is a sample solution which is to be determined. But reference electrode का electrode potential बिल्कुल stable रहेगा, right? Salt bridge was a connected analytical solution जिसमें the electrodes are being dipped out, जिसका हमें पता करना है concentration, okay? And galvanometer which determines the electrode potential, the change in electrode potential, okay? This was all about potentiometry. Indicator electrode 2 types का है and reference electrode was of 1 type. Okay. Thank you everyone. I hope these lectures on potentiometry will be fruitful and will be useful for you. You understood the topic very well. Thank you all of you.